नेल्को के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पे। और कंपनी ने Q4 में बहुत ही बढ़िया नतीजे पेश किए। रेवेन्यूज में 14-15% की ग्रोथ, एबिटा जो है मार्जिन जो है 20%, एबिटा 20% बढ़ के आया, मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं, और पैट में 87% की ग्रोथ। सर, थोड़ा नंबर मुझे समझाइए कि किस किस सेगमेंट से बढ़िया ग्रोथ आ रही है, और FY24 को अगर हम देखें तो ग्रोथ के ट्रिगर क्या होंगे? ओके, पहले तो आपने सिर्फ Q4 का बात किया, पर लेकिन मैं पूरा होल ईयर का बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। FY23 has grown by 20% on revenue terms over FY22, और अपना प्रॉफिट है, इवन प्रॉफिट has grown by 20%, profit before tax, right? So अपना इंडस्ट्री में it is better to look at from a year perspective rather than looking at individual quarters, right? So if you see that from that perspective, we have grown by 20% on revenue year on year, 20% on profit before tax, and our EBITDA has been maintained at 20%. So overall, it has been a good year for us. और जहाँ तक हम देखते हैं in future, I think FY24 would be on a similar kind of growth that we saw in FY23 over FY22. ओके, ये बताइए सर कि ये जो एक बड़ी बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू था, या जो जिस पे मुझसे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, चूंकि वहीं से शुरू करते हैं, ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली सर्विसेज थी, उसमें खबरें थी कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, आप तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही करते हैं। That's the only thing that we do. We are a satellite communications service provider, and आज के दिन पे we are the only company which is catering to all the three segments. एक तो enterprise market, दूसरा है कि अपना maritime communication services, and तीसरा है aircraft communication. So we cater to all the three segments in the country, and we are absolutely focused in satellite communication. So I think you may be referring to a specific news item about something to do with a particular license that was. I'm referring to that only. Yeah, so it's like this. आज के दिन पे हमें for offering satellite communication services, जो भी license चाहिए, all the licenses are with us. There is no license that we don't have it currently with us, right? At different points in time, we keep looking at additional licenses for enabling the business for future, right? At the same time, the new policies are coming up. अभी नया आपने पढ़ा होगा about the new space policy which has come. There's a new discussion happening with TRAI in terms of assignment of spectrum for satellite communication, etc. So as and when we realize that there are requirements for more licenses, we'll apply accordingly. Now, this one, in terms of sometimes you apply something and you pull back and again reapply. This is a part of the operational, day-to-day affair. So to pick it up and project it out may not give a right picture about the company. Just to give a perspective to all the viewers, that Nelco is absolutely focused in satellite communication, and we will offer all the satellite communication in all the sectors where it is possible, right? And that's the way it is. Okay, so basically it's a clarification. You don't need a specific license for a specific service. You have already that one. So you are providing the services. Sir, अगर आपकी जो 3 businesses हैं, इन फ्लाइट, मैरीटाइम और जो, अब मुझे इन फ्लाइट वाला समझाइए सर, अभी क्या उसमें सिचुएशन चल रही है और किस तरीके की पोटेंशियल ग्रोथ आप देख रहे हैं? हमने 3 मार्केट का बताया था, एक तो एंटरप्राइज मार्केट, एक मैरीटाइम कम्युनिकेशन और एक एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन, एयरक्राफ्ट IFC. Yes. Now, last year, all the 3 businesses have grown. So the growth could be slightly different between each of them, but all of them are growing. Number one. Number 2 is that as far as आपने पूछा मुझे specifically on the Aero IFC. Aero IFC also has grown for us. At the moment, the Aero IFC services used होता है over India is for the aircraft which are flying over India. The domestic airlines have not started offering aircraft IFC, which is that passengers accessing the internet. As of today, they have not started. So therefore, that market will open up in due course. We believe that in under 1.5 to 2 years time it will open up, and that will be a big sector for us. At the moment, for Aero IFC, we have a very large number of international aircrafts which are coming into the country or flying over India. They are using our service.
प्रदीप जी, And that is going on very well for us. ये आप कह रहे हैं डोमेस्टिक ने शुरू नहीं किया, क्यों नहीं शुरू करा? तो बहुत समय हो गया आपको इस बात को कि अब शुरू हो जाएगी. Why they are hesitant? No, देखिए, as far as we are concerned, हमने बताया था कि 2020 we will start the service. The license was issued in 2019, and we started the service. Since February of 2020, we are already offering the services to aircraft. It's just that the international aircraft are using it. Now, as far as the domestic market is concerned, then after the COVID hit, there has been a lot of challenges for the industry as a whole. And right now, the domestic airlines industry is seriously considering in terms of when to offer this service. So as and when they decide to offer the service, we are ready to offer the connectivity on the aircraft. So that will happen in due course. सर, लेकिन 20 से 23 हो गया, कुछ एयरलाइंस कंपनियों को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं क्या? No, I don't think so. I will not be able to comment on that. Every industry has their own game plan in terms of when they would like to offer a specific service or when they would like to start some new concepts, etc. So it is up to the airline industry's prerogative as to when they would like to offer the services. ऐसा लगता होगा कि उनकी सर्विसेज बहुत महंगी हो जाएंगी और उतना रेवेन्यू शायद वो जनरेट ना कर पाए, वो चार्ज ना कर पाए, लोग यूज ना करें, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेंट है. इसमें मैं कमेंट नहीं दे सकता हूँ बिकॉज देयर आर डिफरेंट बिजनेस मॉडल. हाँ, ये मतलब उनकी बात है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. एक्चुअली आई नो. चलिए ठीक, मैं सोचा शायद आपको कुछ इंसाइट हो. अच्छा, ये जो एंटरप्राइज सर्विस वाला सर आपका बिजनेस है, जो कि ज़्यादा बड़ा दिखता है मुझे, ज़्यादा पर उसमें किस तरीके के बिजनेस प्लान्स और ग्रोथ आपके हैं? So as I said, overall we have grown by 20% over last year. Going forward, we'll be growing at a similar kind of rate or maybe even better. And that will spread across all of them, enterprise and maritime as well as aircraft communications. So all of them will grow on similar lines. Within that, in a year to year, some of them may be growing faster as compared to the others. That's all. But within enterprise itself, there are multiple segments. So therefore, it's a very complex part of the business. So therefore, for the viewers, I would like to say that as a company, we see growth prospect in all the three segments. And just so that there's no wrong impression being given about the aircraft in the aviation industry, I think India is one of the fastest growing aviation sector. So there is no challenge on that, right? It's a question of when do we start this service of internet connectivity on aircraft for passengers. So it's a question of time that will start. हाँ, ये बात तो सही है आपकी सर की फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री पता नहीं कैसे ग्रो कर रही है. एक ठीक से चलती है तो दूसरी सिक होने लगती है. ये एक बड़ा डिफरेंट सिचुएशन है. आई डोंट वांट यू टू कमेंट. इसमें तो मैं तो कमेंट नहीं करता. एक्चुअली आई नो, इसलिए मैंने कहा आप इसमें शायद कमेंट कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये एविएशन इंडस्ट्री ना अपनी मुश्किलों से बहुत जूझती रहती. सर, आप एटीएम को भी सर्विसेज देते हैं ना? बिल्कुल. क्या अभी भी नए एटीएम लगा रहे हैं बैंक? सॉरी, अभी भी नए एटीएम्स लग रहे हैं क्या? बिल्कुल, अभी भी काफी एटीएम्स लग रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली इन द रिमोट लोकेशन. तो एटीएम ग्रोथ इज स्टिल हैपनिंग. बट आजकल तो सब लोग मोबाइल से पेमेंट सोल्यूशन ले लेते हैं. एंड बिकॉज़ दे आर गोइंग टू रिमोट लोकेशंस, दे आर प्रेफरिंग टू कनेक्ट देम ऑन VSAT, एंड दैट इज वेयर वी आर गिविंग वेरी स्टेबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज टू ऑल द एटीएम्स. दैट्स अ ग्रोइंग सेक्टर फॉर अस. सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे थोड़ा इस पे और बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एटीएम लोग जाते ही नहीं अब, और रिमोट एरिया में भी क्या अब तो पहुंच गया, सब मोबाइल के थ्रू सब कुछ हो रहा है, तो मतलब एटीएम तो ये आप कहते हैं लेकिन ग्रोइंग सेक्टर है. थोड़ा बताइए ना कैसे सर. तो देखिए, while there is payment through mobiles and there are various other mediums, but ATM also is a medium. So therefore, depending on what the requirement of the customers are, for same customer maybe for some reasons would be using from ATM, for some they would be using on a RTGS and in some they could be through mobile. So all of them will coexist, and that's how we see that ATM still growing for us. ये आपकी सर बात बहुत इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लग रही है कि जब से डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ, लोगों ने कहा कि कैश बंद हो जाएगा, बल्कि उल्टा कैश और बढ़ गया इकोनॉमी में, सिस्टम में और ज़्यादा कैश आ गया है बावजूद इसके कि हम लोग डिजिटल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें. मे बी बिकॉज ऑफ द साइज इज ग्रोइंग,
So the pie is also growing for this segment. Absolutely. As I said, all the digital payment as well as ATM both will survive. It's a question of how much will go into each of them, and that will vary depending on sector to sector, application to application, region to region. And over a period of time, there could be different trends coming up, which we'll see. But we are very bullish that ATM will survive and it will exist. And as of today, it's a growing sector. 1 लाख में कितने 20 ATM होंगे पूरे देश में शायद, और उससे भी कम, बाकी देखो में ज़्यादा होंगे. अच्छा सर, ये हम लोग अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, मेक इट सिंपल. एंटरप्राइज सॉल्यूशन, मैरीटाइम है, एविएशन है, ये सब. मुझे इसमें ये बताइए कि अगर हम अगले 4-5 साल का बिजनेस व्यू लेना चाहें आपसे, वो सबसे बड़ा सेक्टर ट्रिगर क्या है आपके लिए? वो कोई नई चीज भी हो सकती है या एग्जिस्टिंग में से हो सकती है? One is that all the sectors will also grow. That is one. There will be some new sectors coming in due course. And that will also depend on satellite capacity. What kind of prices do we have for satellite capacity? What kind of capacities are being available in the country? And once that complexion changes with lower cost capacity, some new markets will also open up. For example, as of today, we do not offer services to the consumer market. With the right price points for satellite capacity, it will be possible to address to the consumer market as well. So those kind of markets will open up in due course. But as of today, we see growth in the enterprise, maritime and aero itself for the next few years. ये कंज्यूमर मार्केट सर ओपन हो रहा है ना अब शायद? बिल्कुल. तो इसमें आपकी क्या तैयारी? There's a new space policy which has come, and the preamble of the space policy is to give a boost to the private sector in space industry, and we believe a lot of positives will happen from that, and that will be a big boost for the satellite industry as a whole. So we'll have to see how this plays out, but we are very, very optimistic that this will have a big boost for all of us. So will it not be very capital intensive sector? फिर से बताएंगे आप? Will it not be very capital intensive? You have to spend lots of money on this consumer service. See, that depends on a different business model. The business model will come up as we get into that service. As I said, it requires us to be able to offer the services at an affordable price, for which we require satellite capacity prices to come down. And there are a lot of initiatives being done, and it will happen in due course. And as and when it happens, we will be able to offer that. And as far as the investments are concerned, we will have to look at it in terms of the specific business model and as and when the services become operational. But whatever it is, we are equipped as a company to be able to address that. Okay, प्रदीप सर, एक लास्ट क्वेश्चन. ये जो पूरा आप मुझे बता रहे हैं, ये अभी मतलब एक थॉट प्रोसेस के लेवल पे है, ड्राइंग बोर्ड पे है, या एक्चुअली इसमें अब काम शुरू हो गया और हम लोग जल्दी इसको देखेंगे? एक इन्वेस्टर आपसे जानना चाहता है कि नेल्को हमारी कंपनी क्या करने वाली है? So for an investor perspective, as of today, we are focusing on enterprise, maritime, aircraft communication. All of them are growing sector. We will do that. As and when the newer capacities are available, lower cost capacities are available, we'll expand to newer areas. Enterprise could be one of them. The consumer could be one of them. And any other new satellites which come up, which offers newer areas, we will expand to that. Essentially, what I'm saying is that with the changing policy and with new technologies, there will be a lot of development happening in the industry. And as a company, we will keep taking advantage of all the developments and keep expanding our market. ओके, तो अभी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है, प्रदीप जी ऐसा बता रहे हैं. और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी उसके लिए कंपनी ब्रेस्ड अप है, तैयार है उसके लिए, मतलब काम उसमें करेंगे. प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और ये बताने के लिए. ये मुझे भी बहुत दिलचस्प इंटरेस्ट लगा कि एटीएम सेक्टर स्टिल ग्रोइंग, बावजूद इसके कि इतनी डिजिटल इकॉनमी है, और उसके लिए नेल्को आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो नेल्को ने बहुत ही शानदार ईयर क्लोज किया है, क्वार्टर क्लोज किया है, और स्टॉक इस समय 627 रुपये 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा है. छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट.